तो इन दिस चैनल आई बी डूइंग अ सीरीज ऑफ आर्ट या पार्ट टू जिसको देखकर आप खुद सुन सकते हो एंड खुद प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड मोर ओवर जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तब तक यू विल बी एबल टू क्राफ्ट योर ओन कॉल। सो नाउ आरटीआर पार्ट टू में क्या होता है कि द फर्स्ट थिंग इज टू नो द क्वेश्चन। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज टू नो द क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन कैसे होता है, क्वेश्चन के अंदर क्या क्या गिवन है एंड व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। This is the main thing. Second and most important thing is you craft a call by yourself. So how do you craft a call? How do you craft a call? So these are the two things. Uh, these are the two things which are backbone of RTR Part 2, which are backbone of RTR Part 2. Once you know these things, आपका RTR Part 2 clear है and no one can stop you from passing RTR Part 2. इतना you guys got it? ठीक है, तो चलो. So before starting this video, I'll be needing you guys to download iCow का doc 9432. आप ये लिख सकते हो या you can right now go to the Google का second tab and search iCow doc 9432. 9432. इतना you guys can search. ठीक है. Why I'm telling about this doc क्योंकि this doc is the manual of radio telephony. ठीक है, manual of radio telephony मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया. सो आपको ये बुक चाहिए एंड इस बुक के अंदर क्या गिवन है, इस बुक के अंदर ये गिवन है कि हाउ अ कॉल इज सपोज टू बी गिवन एंड व्हाट आर द सिचुएशन इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ कॉल्स आर गिवन और टू बी गिवन. ठीक है, सो आई वांट यू गाइस टू डाउनलोड दिस बुक. प्लीज डाउनलोड दिस बुक एंड कीप इट असाइड. लाइक आप गूगल में जस्ट सर्च कर सकते हो iCloud doc 943 टू डाउनलोड एंड इजीली यू विल बी गेटिंग इट. सो वंस यू डाउनलोड दिस बुक, अगर आपके पास प्रिंटर की फैसिलिटी है सो ऑब्वियसली प्रिंट इट एंड कीप इट, और इफ यू गाइस हैव एन आईपैड दैट्स फार बेटर. सो अकॉर्डिंग टू योर विश. तो चलो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आरटीआर पार्ट 2. इतना आई गेस यू गाइस शुड अंडरस्टैंड and you guys should download this book, and moreover we are going to start with RTR part 2. Okay, so let's start. RTR Part 2. Come on. So, what do you think RTR Part 2 is? You can pause the video and answer by yourself. So, RTR Part 2 is nothing but how you communicate with the ATC. Okay? How you communicate with the ATC. Being a pilot, how do you communicate with the ATC in different type of situations? Let's say you're facing an urgent situation, a distress situation. So how you're going to call the ATC and what instructions is he going to give it to you? So basically the language part, understand the language part which you guys will be dealing with the ATC is nothing but RTR part 2. Or you can tell RTR part 2 is nothing but just an aviation language. ठीक है, aviation की language है ये. It's an aviation language. I well got it. So let me give you the gist of RTR part 2 या aviation की language. Okay. So let's say आपका नाम ध्रुव है. Okay. आप ध्रुव हो and you're in Delhi. And there's another guy who's your friend. His name is Abhishek. Okay. So you guys are miles apart. Okay. So you guys are miles apart. So how will you guys be reaching to each other? By a phone call. Okay. By a phone call. So by calling, you guys will be reaching each other. Okay. Back and forth. Back and forth. सो नाउ अभी क्या होता है कि आपके पास आप दिल्ली में हो एंड आप ध्रुव हो. ठीक है, आप दिल्ली में हो, आप ध्रुव हो एंड आपके पास एक न्यू नंबर है. यू यू हैविंग a न्यू नंबर. Okay, you're having a new number and your friend who's in Bangalore, who is Abhi, he doesn't know your new number. So what are you going to do? You're going to give him a call and tell that you're Dhruv. ठीक है, आप उसको कॉल करोगे एंड बोलोगे कि आप ध्रुव हो. सो हाउ विल यू गाइस गिव द कॉल? आप कॉल कैसे दोगे उसे? सो आप कॉल ऑब्वियसली ऐसे दोगे कि हाय भाई अभिलांश, सॉरी, हाय भाई अभिषेक या अभी. तो यू गोइंग टू टेल हाय अभी, अभी दिस इज ध्रुव, दिस इज ध्रुव, हाय अभी दिस इज ध्रुव. और बता क्या हाल है, और बता क्या हाल है. ठीक है, और बता क्या हाल है. सो ये
कॉल होगा जो आप उसको दोगे, ठीक है। तो आप उसे क्या बोलोगे, न्यू कॉल के नंबर से आप उसे ये बोलोगे कि हाय अभी, दिस इज ध्रुव, और बता क्या हाल है। तो आपने ये कॉल दे दिया, किसको दिया, आपने ये कॉल अभी को दिया है, ठीक है, अभी हु इज इन बैंगलोर राइट नाउ। गॉट इट, सो यू गाइस हैव गिवन अ कॉल टू बैंगलोर, टू अभी, एंड दिस इज द कॉल का स्ट्रक्चर विच यू gave him. So now what I want you guys to do, if you have a notebook, please write this down and remember this call. Okay, remember this call. I put a star over here. Remember this call. Now why I want you guys to remember this call? It is because कि ये call आपका RTR part 2 का base है. This is the base of RTR part 2. This is the base of what? Of RTR part 2. ये कॉल आपका बेस है आरटीआर पार्ट टू। नाउ क्यों ये बेस है मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। अभी इतना यू गाइस शुड अंडरस्टैंड कि आप दिल्ली में हो। लेट मी यूज अनदर पेन, ओके आई गेट दिस वन। सो अभी आप दिल्ली में हो एंड यू आर ध्रुव, एंड यू आर गिविंग हिम अ कॉल, अ फोन कॉल टू योर फ्रेंड हु इज अभी इन बैंगलोर। Basically, you guys are miles apart and you are Dhruv and Del, you're giving a call to Abhi. Okay. Once you give this call to Abhi, you're going to tell this कि hi Abhi, this is Dhruv. और बता क्या हाल है? Got it? Now we are not going to see कि अभी क्या बोल रहा है. ठीक है, we are going to see that later. But first of all, इतना आप लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए कि आप क्या कॉल दोगे उसे. कि hi अभी, this is Dhruv. और बता क्या हाल है? इतना you guys got it, and please write it down and remember this point. Remember, क्योंकि ये आपका बेस होगा आरटीआर पार्ट टू के लिए। मूविंग फॉरवर्ड, सो अभी से भूल जाइए जो भी ये सब है, इसे भूल जाइए। अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, वील बी डूइंग द बेसिक ऑफ आरटीआर। बेसिक, ठीक है, बेसिक बेसिक क्या होगा, बेसिक होगा जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अर, ठीक है, 9 और क्या हो गया, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, ये सब आपको आना चाहिए। सो ऑल दी फोनेटिक अल्फाबेट, अल्फा, ब्रावो, चार्ली, डेल्टा, along with you this word niner, like obviously और भी words है, 1 2 4 5 9, niner, 6 7 and all, many words are there, but this word niner, you're going to use it। आप नाइन नहीं बोलोगे, आप बोलोगे नाइनर, ठीक है। सो इट्स गोइंग to spell like this, Niner, niner. So it means just keep it in your mind. The word nine is supposed to be spoken or spoken as, my bad, spoken as niner. Okay. Alpha, Bravo, Charlie, Delta, and this so obviously you guys should know. And if you guys still don't know, it's very easy. एक बार just see through कर दो and it's gonna stay with you forever. It's not that hard also. ठीक है? Got it? So ये हो गया बेसिक। बेसिक क्या हो गया, हम नाइन को नाइनर बोलते हैं और अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा। इतना हो गया बेसिक। अभी आते हैं दी मेन पॉइंट पे। व्हाट वी लेफ्ट आउट ओवर हियर इज हाय अभी, दिस इज ध्रुव, और बता क्या हाल है। वी आर गोइंग टू कम ओवर हियर, ओके। सो बिफोर कमिंग ओवर देयर आई वांट यू गाइस टू नो द बेसिक यूनिट of ATC. So now obviously you guys know that there is an ATC tower. ATC tower क्या होता है, ATC tower वो होता है जो gives instruction to the aircraft on the runway or on the air, ठीक है, to do certain type of maneuvers or to get certain type of clearance। मतलब ATC aircraft को clearance देता है, okay, it gives aircraft clearance or it gives the aircraft some instructions to comply with, ठीक है, इतना हो गया। Okay, she understood. Now it's ATC के total four types of division है, या four type of subunits हैं। And if you think I'm going a little bit faster, you can just pause the video and just go back through it, okay? और अगर तो आपको लग रहा है कि मैं फिर भी फास्ट जा रहा हूँ, so please just let me know in the comments, okay? So अभी ATC के four divisions हैं। वो division क्या हो गया? The first and foremost thing is ground. The first and foremost thing is ground. Second, which is tower. और हमें ये याद रखना है, हमें टेक ऑफ एंड लैंडिंग क्लियरेंस टावर से मिलती है, ठीक है। गॉट इट। देन वी हैव समथिंग कॉल्ड कंट्रोल, वी हैव समथिंग कॉल्ड कंट्रोल, एंड देन एट लास्ट वी हैव समथिंग कॉल्ड अप्रोच।
अभी हमें ये नहीं जानना है कि ग्राउंड क्या करता है, टावर क्या करता है, कंट्रोल क्या करता है और अप्रोच क्या करता है। अभी हमें जानना है कि बस these four sub units of ATC is there, and each of these sub unit deals with different type of aircrafts at different position. Got it? Ground, obviously, the name signifies ground. Ground पे जो maneuvers होगा, the responsibility for that is of ground. Tower, you can't get it, but okay, fine. तो इतना याद रख लो कि ये चार thing हैं. There are these four things, four subunits of an ATC, and these four subunits are held responsible for each segment of the flight or pre-flight. Got it? तो चलो आगे बढ़ते हैं. Now we are going to do an official call for RTR part 2, which is radio check. Which is radio check. Got it? And I'll keep this video short so कि आप लोगों को ज़्यादा pressure ना पड़े. And moreover, RTR part 2 का syllabus is very easy. Just trust me, guys. You should just know how to speak. That's it. And nothing else. You guys should know just how to speak. That's it. And nothing else. ठीक है? And the syllabus for RTR part 2 is very less. Got it? So RTR part 2 का real call अब हम करने वाले हैं, which is going to be the first call is going to be radio check. The first call is going to be radio check. So we are going to start off with something called radio check. So now before radio check, there is something called a readability scale. Okay, there is something called a readability scale. Okay, so readability scale is between 1 to 5. So हमारा एक scale जाता है which is 1 to 5, and 1 is being unreadable at all. कि हम सुन ही नहीं सकते. We can't read it. And 5 is being कि perfectly fine भाई, सब कुछ सुनाई दे रहा है मस्त एकदम. कोई बात नहीं भाई, तो बोलते रहे बस. सेकंड पे क्या आता है रीडेबिलिटी स्केल का? सेकंड पे क्या होगा? इट्स रीडेबल नाउ एंड देन. सो बेसिकली यू कैन रीड द पर्सन बट यहाँ वहां. सो इसके लिए दो क्रॉस मार देते हैं. थर्ड वन, थर्ड वन का क्या सीन रहता है? थर्ड वन का ये सीन रहता है कि हम तुम्हें सुन सकते हैं बट मुश्किल हो रही है सुनने में. सो एक क्रॉस. सो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? रीड यू बट विद डिफिकल्टीज. सो हम इसे सुन सकते हैं बट तकलीफ हो रही है सुनने में. फोर्थ वन क्या है कि हाँ भाई, आई कैन रीड यू ठीक था. ठीक है, बढ़िया सुनाई दे रहा है. एंड फाइव क्या है कि भाई क्या 4D ऑडियो एकदम मस्त सुनाई दे रहा है. ठीक है, so इतना यू गाइस शुड अंडरस्टैंड. सो फर्स्ट इज बीइंग कुछ नहीं सुनाई दे रहा है. सेकंड इज बीइंग थोड़ा बहुत सुनाई दे रहा है. थर्ड इज बीइंग थोड़ा सा अच्छा सुनाई दे रहा है. फोर्थ इज बीइंग हाँ भाई बढ़िया सुनाई दे रहा है. एंड फाइव मतलब भाई साहब 8D ऑडियो में सुनाई दे रहा है. ठीक है, सो लेट्स कंटिन्यू. सो अभी हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग रेडियो चेक पे थे. सो व्हाट इज अ रेडियो चेक? So basically, before flight, what happens? Let me tell. Before एक flight, so you guys know, right? एक flight कहाँ पे रहती है? मतलब एक एयरक्राफ्ट कहाँ पे पार्क होता है? अपने एप्रन में पार्क होता है. So this aircraft is parked on its apron. एंड अप्रैल में क्या होता है? कार्गो लोडिंग होती है, लोड होता है, रिफ्यूलिंग होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल दिस थिंग. ठीक है, दिस इज नॉट नीड फॉर आरटीआर पार्ट 2, बट सम जनरल नॉलेज. लेट्स से दिस अप्रैल का नंबर इज अल्फा 15. ओके, अप्रैल का नंबर इज अल्फा 15. सो अभी दिस एयरक्राफ्ट इज पार्क्ड इनसाइड दिस एप्रन, and while being parked inside the apron, you should make a call to the ATC. ATC tower, let's say it's over here. Okay, I'm going to draw a simple tower. वाह क्या टावर है, बढ़िया टावर है भाई. लीव इट. ठीक है, दिस टावर इज द एटीसी टावर. ओके, सो यू who's being parked in its apron, Alpha 15 is making a call to the tower, which is over here. And हम कौन से यूनिट पे कॉल करेंगे? Do you guys have any idea? मैंने क्या बोला था? There are four units, which is ground, tower, कंट्रोल, अप्रोच. ग्राउंड, टावर, कंट्रोल, अप्रोच. सो हम इनमें से किस यूनिट को कॉल करेंगे एटीसी के? एनी गेसेस, एनी आइडिया? वेयर इज द एयरक्राफ्ट पार्क्ड? इन इट्स एप्रन. एप्रन कहाँ पे होता है? ग्राउंड पे होता है, ऑब्वियसली. सो वील गिव अ कॉल टू द ग्राउंड, एंड दिस इज द फर्स्ट कॉल स्टैब्लिश विद द एटीसी टावर. गॉट इट? ठीक है, सो क्या कॉल है? रेडियो चेक की कॉल. इतना यू गाइस अंडरस्टूड. हम ग्राउंड को कॉल देंगे, ग्राउंड को कॉल देंगे, कॉल ग्राउंड. Okay, call. Call is given.
Call is given to the ground unit, far better. The ground unit of the ATC of the ATC. ठीक है, कॉल इज गिवन टू द ग्राउंड यूनिट ऑफ द एटीसी. सो अब ये कॉल क्या होगा? You remember the first example, the format क्या I gave? Hi अभी, this is Dhruv. और बता क्या हाल है? The same thing we are going to give it over here, but we are going to name a name to the aircraft. हम aircraft को एक नाम देंगे. Let's say this aircraft is I flight 234. नहीं नहीं नहीं, I flight 239 रखते हैं, so you guys can comply with niner. I fly I fly 239er. ठीक है, नाइनर. दिस इज नॉट नाइन गाइस, ठीक है? नाइन इज कंप्लीटली रॉन्ग. इट इज नाइनर. एंड दिस इज द डिस्टिंक्ट साउंड. एंड दिस इज द एंड दिस इज द साउंड. एंड दिस इज द ओनली वर्ड. एंड दिस इज द ओनली अल्फाबेट. And this is the only number which is going to make a clear distinction between 9er and the other 9. ठीक है, 9er and the other 9. So अगर आप कोई तो जाते हो ये एग्जामिनेशन में, एंड एग्जामिनेशन में जाके आप नाइनर की जगह नाइन बोल दोगे, तो भाई वो एग्जामिनर सामने बोलेगा कि क्या बुद्धू बच्चा है भाई, उसको नाइनर भी नहीं आता, which उसको नाइनर भी नहीं आता, विच इज द बेसिक ऑफ आरटीआर पार्ट टू. ठीक है, सो प्लीज गाइस जस्ट कंप्लाई विद इट. इट इज नॉट नाइन, इट इज नाइनर. चलो लेट्स गो फॉरवर्ड. तो अभी यहाँ पे क्या फॉर्मेट गिवन था? यहाँ पे ये फॉर्मेट गिवन था कि हाय अभी, दिस इज ध्रुव, और बता क्या हाल है. ठीक है, तो यहाँ पे कौन क्या हो गया एक बार बता दो. ये एयरक्राफ्ट जो यहाँ पे है, ये ध्रुव हो गया जो कि आप हो. ठीक है, ये ध्रुव हो गया जो कि आप हो. और ये कौन हो गया? ये अभी हो गया, ये एटीसी का यूनिट अभी हो गया. ठीक है, तो जल्दी जल्दी एक कॉल दो अभी को. आप ध्रुव बन के कॉल दो अभी को. बताओ कि आप एक रेडियो चेक दे रहे हो. ठीक है, अभी को एक कॉल दो जल्दी जल्दी इनफॉर्मल वे में. बट ये याद रखना है कि ध्रुव और अभी की जगह हमें आई फ्लाइट 239er और ग्राउंड यूज करना है. सो लेट्स से अभी कहाँ पे था? बैंगलोर में था. सो बैंगलोर, ठीक है, ये बैंगलोर हो गया. एंड आप भी अभी बैंगलोर में ही हो. लीव दैट. लेट्स से दिस इज बैंगलोर, बैंगलोर का टावर. तो अभी ये कौन? अभी कहाँ पे था? बैंगलोर. सो लेट्स से यू आर विद बैंगलोर ग्राउंड. ओके, तो जल्दी एक कॉल दो अभी को. पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ. ओके, सो नाउ लेट्स क्राफ्ट द कॉल. क्राफ्ट द कॉल, ठीक है. ओके, सो नाउ लेट्स क्राफ्ट द कॉल. कॉल क्या होगा? कॉल ये होगा, वी गिव दिस कॉल इन एन इनफॉर्मल वे फर्स्ट. ठीक है, मैं इतना एम्फोसाइज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि अगर आपके बेसिक क्लियर होते हैं आरटीआर पार्ट टू के, कि टॉप नॉच कॉल्स व्हिच आर वेरी हार्ड इज गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर यू. इट्स गोइंग टू बी फ्लोइंग लाइक अ वाटर. ठीक है, इट्स गोइंग टू बी फ्लोइंग एज. ठीक है, इतना यू गाइस गॉट इट. तो चलो, तो अभी कॉल क्या आप दोगे? तो वहां पे क्या था? हेलो भाई, दिस इज ध्रुव. ठीक है, या हेलो अभी. तो कॉल क्या दोगे? तो ठीक है, चलो मैं यहाँ पे इनफॉर्मल कॉल देता हूँ यूजिंग दिस आई फ्लाई 239er एंड बैंगलोर ग्राउंड. ऑलराइट, चलो लेट्स गो. सो द कॉल इनफॉर्मल, मैं फॉर्मल नहीं दे रहा हूँ, मैं एविएशन लैंग्वेज में नहीं दे रहा हूँ. मैंने बस ध्रुव का नाम आई फ्लाई 239er में कर दिया है, एंड अभी का नाम बैंगलोर ग्राउंड में कर दिया है. ठीक है, बस इतना ही कर रहा हूँ. तो ऊपर क्या गिवन था? ऊपर मैंने ये लिखा था कि हेलो, हेलो अभी. अभी की जगह हम यूज करेंगे ग्राउंड क्या? बैंगलोर ग्राउंड. यूज बैंगलोर ग्राउंड अभी की जगह. उसके बाद क्या? वो उसके बाद क्या? वी टोल्ड दिस इज ध्रुव. तो अभी वी आर गोइंग टू क्राफ्ट. तो अभी वी आर गोइंग टू क्राफ्ट अ कॉल. हम एक कॉल क्राफ्ट करेंगे जहां पे हम लोग कॉल दे रहे होंगे किसको? बैंगलोर ग्राउंड को. बैंगलोर ग्राउंड राइट ओवर हियर. ओके, इसको हम कॉल दे रहे होंगे. क्या बन के दे रहे होंगे? ध्रुव बन के दे रहे होंगे, विच इज आई फ्लाइट 239er. एंड वी आर गोइंग टू गिव दिस कॉल इन सिंपल लैंग्वेज, दैट मीन इन इनफॉर्मल लैंग्वेज, नॉट इन एविएशन आरटीआर पार्ट टू की लैंग्वेज. ठीक है, इनफॉर्मल लैंग्वेज. इनफॉर्मल लैंग्वेज में क्या हो गया? हेलो अभी.
अभी की जगह क्या हो जाएगा? अभी की जगह बैंगलोर ग्राउंड हो जाएगा। हेलो बैंगलोर ग्राउंड। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ सबका। दिस इज ध्रुव। ध्रुव की जगह क्या हो जाएगा? आई फ्लाइट 239er। ध्रुव की जगह आई फ्लाइट 239er हो जाएगा। हेलो बैंगलोर ग्राउंड, दिस इज आई फ्लाइट 239er। और बता क्या हाल है? अब हम और बता क्या हाल है कुछ चेंज करेंगे। हाउ डू यू रीड? ठीक है। हाउ डू यू रीड? ये हो गया इनफॉर्मल कॉल। Now, if you guys want to change this call in the Asian language, you guys just have to eliminate few words from here. Few damn words. And that's it. You have the call. So now, if you have enough understanding, obviously आपको पता चल गया होगा कि हम hello को eliminate करेंगे and this is को eliminate करेंगे. But you know what? There's a catch in this. This is ये जो set of words है, these two set of words, you can and this along with iFlight 239er. There's no need of eliminating this. It will be Bangalore ground. This is iFlight 239er. How do you read? And voila, you have your first call. Got it. It's your first radio checky call. So let's write this down. क्या हो जाएगा? Bangalore ground. Bangalore ground. This is iFlight 239er. How do you read? How do how do you oh my god. How do you oh, I don't do this for damn. How do you read? How do you read? So basically आप बैंगलोर ग्राउंड को बोल रहे हो कि आप कैसे सुन पा रहे हो. So in this what you're asking the readability scale which we discussed it over here. हमने यहाँ पे डिस्कस किया था रीडेबिलिटी स्केल के बारे में. ठीक है 1 से 5 तक है. So अभी क्या करना है? We have to do this कि after giving this call Bangalore ground is going to respond to our call. क्या respond करेगा? Respond ये करेगा कि I fly 239er. I fly 239er. Bangalore ground. This is Bangalore ground. वो भी बोल सकते हैं नहीं बोल सकते. It's completely his choice. Bangalore ground. Read you 5 या read you 3 या read you 1. He can say as it is. उसको जो भी समझ आ रहा है अच्छे से या जो भी समझ नहीं आ रहा है वो वैसे बोलेगा. So let's say वो बोलता है read you 3 या read you 2. Read you 2. Got it. अभी 2 क्या हो गया हमारे यहाँ पे? Let's see the table of here. 2 basically means read you here and there. 2 हो गया read you here and there. So अभी वो आपको अच्छे से सुन नहीं पा रहा है. So अभी ये आपको अच्छे से सुन नहीं पा रहा है. So now in this case, what do you have to do? You guys have to give a long tuning call. This is the second call you're going to write in this video or in this session. This is the second call you're going to write in this session. So long tuning call. Let me just on the pen. The topic is long tuning call. Topic is long tuning call. And keep this in mind. You have to tell this call within 10 seconds. Within 10 seconds. You can't escape this 10 seconds. Got it? 10 seconds की time limit को आप escape नहीं कर पाओगे. So on the clock you'll be having exactly 10 seconds and this is a rule in the doc 9432. It's the rule given. It's a fact and you can't escape this. So call क्या होगा इसका? So basically let me tell you this one thing. ये जो red pen होगा from this video on, this red pen is going to be used for the pilot, which is us, and the yellow pen is going to be used for the ATC. Got it? So a long tuning call, how do I give a long tuning call? So long tuning call is given in this way. Delhi ground, sorry, correction. Bangalore ground. Bangalore ground. यहाँ पे आपको दिस इज बोलने की जरूरत नहीं है. आप बोल सकते हो आई फ्लाइट 239er just as your call sign. Bangalore ground. Sorry, I flight 239er. I flight 239er. Giving you a long tuning call.
You should say this as it is. Giving you a long tuning call. Giving you a long tuning call. One, two, four, five, five, four, three, two, one. I'll ask, how do you read? How do you read? ये हो गया हमारा लॉन्ग ट्यूनिंग कॉल एंड दिस कॉल इज सपोज टू बी स्पोकन इन 10 seconds 10 seconds के टाइम लिमिट को इट शुड नॉट क्रॉस सो ये कुछ ऐसा होगा बैंगलोर ग्राउंड आई फ्लाई 239 गिविंग यू अ लॉन्ग ट्यूनिंग कॉल 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 हाउ डू यू रीड एंड इसको सुन के बैंगलोर ग्राउंड आपको एक रिप्लाई देगा व्हाट इज दैट रिप्लाई एंड इन दिस रिप्लाई ऑब्वियसली ही इज गोना से रीड यू 5 या रीड यू 4 okay he'll be telling he can directly tell read you 5 sorry read you 5 yeah read you 5 इसको सुन के एंड इस कॉल को सुन के एंड इस कॉल को सुन के बैंगलोर ग्राउंड आपको दोबारा एक कॉल देगा जो कॉल एक अक्नॉलेजमेंट कॉल होगा अक्नॉलेजमेंट कॉल क्या होगा अक्नॉलेजमेंट कॉल ये होगा कि आई फ्लाइट 239 दिल्ली करेक्शन बैंगलोर ग्राउंड हम लोग बैंगलोर ग्राउंड है आई फ्लाइट 239 बैंगलोर ग्राउंड रीड यू 5 या रीड यू 4 इसके बाद हमें एक सिंपल रिप्लाई दे देना है लाइक इसका एक्नॉलेजमेंट क्या हो जाएगा इसका एक्नॉलेजमेंट ये हो जाएगा वी कैन जस्ट टेल आवर कॉल साइन व्हिच इज आई फ्लाई 239 हम लोग ये इसलिए बोलते हैं ताकि हमें ये लगे सॉरी ताकि इस कंट्रोल यूनिट जो कि ग्राउंड है इसको ये लगे कि हम सुन गए इनका कॉल लाइक इन्हें पता चल गया कि हम so we can just tell our call sign and end the transmission now why do we tell so now why do we tell this call sign हम लोग कॉल साइन इसलिए बोलते हैं ताकि ये जो कंट्रोल यूनिट यहाँ पे है, जो ग्राउंड है अभी ग्राउंड को लगे कि भाई हमने सुन लिया है हमने सुन लिया कि तुम हमें रीड यू 5 सुन सकते हो सो दैट्स इट इज द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन सो अभी तक आई गेस यू गाइस अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉल बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कॉल क्या होगा लेट मी जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू गाइस अच्छे से लेट मी जस्ट पुट हाईलाइट एक सेकंड is this green ठीक है I'm going to use a highlighter over here. So when we start giving पहले वाले का कॉल साइन मतलब जो हमारे सामने है इन दिस केस हमारे सामने कौन है हमारे सामने एटीसी कंट्रोल यूनिट है ऑफ बैंगलोर विच इज द ग्राउंड सो वी आर गोइंग टू टेल बैंगलोर ग्राउंड ओ माय गॉड ये क्या कलर है भाई साहब कोई बात नहीं वाइट यूज कर लेते हैं वी आर गोइंग टू टेल बैंगलोर ग्राउंड दिस इज आई फ्लाइट 239 यहाँ पे हम अपना कॉल साइन बताते हैं अपना कॉल साइन क्या है दिस इज आई फ्लाइट 239 हाउ डू यू रीड उसके बाद जब सामने वाला इन दिस केस कौन है अगेन इन दिस केस वी हैव बैंगलोर ग्राउंड जो सामने वाला है वो हमें कैसे एड्रेस करेगा वो हमें करेगा एड्रेस बाय टेलिंग आवर कॉल साइन फर्स्ट व्हिच इज आई फ्लाइट 239 Bangalore ground by telling our call sign first and his call sign at the second is. This is the basic format of a call. This is the basic format of a call. And that's how you see the call continues. Okay, you can see the continuation of the call. एंड लास्ट में जाके हमने बस अपना कॉल साइन बोल दिया क्योंकि दिस इज एन अक्नॉलेजमेंट कॉल हमने सुन लिया है कि बैंगलोर ग्राउंड जो थे यहाँ पे he can read us or he or she can read us 5 ठीक है ये हो गया so that's it for today's video for today's session I guess I hope you guys understood और अगर तो कोई डाउट होता है आपको
कि कैसे क्या हो रहा है, कोई कॉल्स में डाउट हो रहा है, कोई फॉर्मेट में डाउट हो रहा है, you guys can just give it in the comment section कि जो भी डाउट है, and then I'll be solving it in the next video or in the comment section itself. और के बाद इस सेशन के बाद there are many more session lined up. We have weather deviation, we have mayday, pan, we have root key call. There are many more things, and like RTR part, trust me, it's one of the interesting subjects which you guys can do in the six subjects or few which you have in this DGC examination. So RTR part is the best thing, the best subject to learn and it's so interesting. And हम अगले वाले वीडियो में क्या करेंगे? अगले वाले वीडियो में हम इंजन स्टार्टअप पुशबैक की कॉल करेंगे, then check की कॉल, and according to it we'll be seeing क्या क्या calls आता है. ETC clearance is a long call. That will be keeping a separate video, like उसका एक separate video लग जाएगा. But पहले हम अपनी basic strong करेंगे. We'll be knowing how to craft a call, and after that we'll be able to solve any call which is going to be given to you as a form of the question. Okay? So I hope you guys understood. That's it for today's video. If you guys have any doubt, please write it down in the comment section. I hope you like it.